So to all of us watching here today, I hope you're ready to witness the powerhouse of Indian cricket, who is Sushma Verma ma'am. She's not just a cricketer, but a fearless wicketkeeper and a right-handed batter. Her journey to the national team is no ordinary tale. She captained the Himachal team and brought them to the runners-up spot at the Under-19 All India Women's Tournament in 2011. She's teamed up with all the legends like Mithali Raj and Poonam Rao and all of the other legends of Indian cricket. And she was a part of the Indian team at the unforgettable journey in 2017 with the Women's World Cup. So I hope you all brace yourself for this fierce cricketer's journey that we will all hear about today. And thank you so much, ma'am, for joining us in Rishi Hood Presents Classroom to Career Season 3 with I.I.M.U.N. It's an honor to have you with us here today. Thank you. Thank you so much. Thank you. Pleasure is all mine here. Right, ma'am. So I think we should start at the very beginning. A lot of times you have shared that in school you used to play many sports. And then how did you land on cricket? How did your journey with cricket begin? जैसा हर एक प्लेयर अगर आप बात करोगे कि गली क्रिकेट तो बट जिस तरीके का क्रिकेट का स्टारडम जो इंडिया में है, जिस तरीके से लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को, वही उसी तरीके की अप्रोच मेरी भी थी उन दिनों में. बट बाकी सारी गेम्स खेलने के बाद क्रिकेट में आना इसलिए हुआ बिकॉज वो सारी गेम्स खेलते हुए ना कहीं वो अंदर ऐसा फील होता था कि यार ये नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, मुझे क्रिकेट ही खेलना है. मैंने क्रिकेट लेट इसलिए खेला बिकॉज कोई एकेडमी नहीं थी आसपास, किसी ने कभी कोई गाइडेंस नहीं मिली, किसी ने कोई गाइड नहीं किया कि आपने कैसे शुरू करना है प्रॉपर प्रोफेशनली, वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है. तो जब बाकी सारी गेम्स में 2-3 गेम्स में मैंने नेशनल खेला है बहुत बार. आई मीन 9th क्लास से मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में. तो वो टाइम था एज एन एथलीट मुझे बहुत सारी चीज़ें ग्रो करने को और खुद में इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला. बट लेटर क्रिकेट को कैपिटलाइज करने के लिए वो काफ़ी हेल्प किया. सो ये टाइम था व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्कूल एंड एंटर्ड द कॉलेज. तो ये वो टाइम था जहाँ आई गॉट एनरोल्ड टू द एकेडमी एंड क्रिकेट सेटअप. And since then, there is no looking back. I think that's a wonderful start, ma'am. And it's so amazing that from class 9 you started traveling to play sports. Yeah. And that is a very young age to begin. So I think that's wonderful. But and this is something I'm sorry. I'm very kind of, you can call me sports mad person. So abhi bhi, although I'm professionally into cricket, but अगर मुझे अभी भी टाइम मिलता है so I make sure कि मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ. एंड या फिर आप जहाँ फिजिकली ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करना चाहते हो, लाइक स्नूकर, टीटी, आई मेक श्योर दैट आई एम प्लेइंग वो चीज़ें जहाँ मैं रादर देन प्रोफेशनली जो आप प्रेशर कैरी करते हो बीइंग अ क्रिकेटर, वो सारी चीज़ें शायद वो सब अदर गेम्स में मुझे वो प्रेशर नहीं है. आई जस्ट एंजॉय तो वो वाला टाइम जो रहता है उसमें मज़ा आता है. So I'm still same. It's just that I'm not competing at any level except cricket. Yeah. That's wonderful to hear, ma'am. I think other sports serve as a stress buster to you, just to enjoy and play for fun. Right. But speaking of fun and in careers such as sports, like you said, when you played professionally, there is a lot of pressure. There's a pressure to serve the country. There's a pressure for your team and everybody. There's so many eyes watching you. Over a long term, a sports person's mental health becomes something that is very important for them to take care of, and to keep themselves mentally also fit, as physically fit as they always are, mentally also to remain fit. So what are some things that you do have been doing throughout your career to remain to keep your mental health upright, and what are some things you think sports people should be doing in general for their mental health? Good question. जो मैं बात करूंगी, जिस टाइम से थोड़ा सा विमेन क्रिकेट हाईलाइट हुई है उसके बाद से एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, डे बाय डे आपकी रूटीन, आपके वो लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जब आप मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ का जो लोग बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हैमर करती है, फॉर श्योर करती है. अगर मैं पर्सनली एक्सपीरियंस अपना बताऊं तो शायद आई हैव सफर्ड this during lockdown, just before lockdown when I got dropped for the team from the team. तो वो टाइम था जहाँ पे सडनली आप टीम में नहीं हो,
you are not in the same environment. And वैसे जब इंडिया में कल्चर है कि जब आप किसी सेटअप से बाहर हो जाते हो तो यू आर टोटली साइडलाइन, राइट? सो लोगों का आपके और जो नजरिया रहता है देखने का, आपकी आई मीन टोटली साइडलाइन हो जाते हो, ऑफ साइड हो जाते हो सबके लिए। और सडनली लॉकडाउन एंड एवरीथिंग वाज शट। सो वो फेज था जहाँ आई हैव एक्सपीरियंस दिस वेरी क्लोजली, कि आई शायद वो फेज था वेयर आई लर्नड अ लाइफ अ लॉट, कि एक लाइफ को कैसे जीना है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो वो लर्निंग सारी अभी तक की यही है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास लोग किस तरीके के हैं, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपकी कंपनी मैटर करती है, आपके फ्रेंड्स, आपका वो सर्कल। फॉर मी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेंटल हेल्थ में, अगर इफ आई फाइंड पीस बीइंग अराउंड माय ओन पीपल, दैट्स द मोस्ट पीसफुल थिंग फॉर मी। कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम समवन दैट्स व्हाई पीपल आर अराउंड मी। ठीक है, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इसलिए लोग जैसे सबके सबके फ्रेंड्स रहते हैं, सबका सर्कल रहता है, वो डजेंट मैटर आपकी एज मेट्स है या फिर आपसे बड़े हैं छोटे हैं, किसी के साथ भी आपकी दोस्ती हो सकती है, आपको अच्छा लग सकता है। तो इम्पोर्टेंट है उस फेज में जब आप लो फील कर रहे हो या आपको कोई चीज बार बार आपकी पीस खराब कर रही है, या फिर जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट से रिलेटेड ही हो, बट ऑफ क्रिकेट भी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चलती है। और स्पेशली व्हेन यू आर आई थिंक मेरे केस में व्हेन आई टर्न 25, उसके बाद से आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट लाइफ अ लॉट। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट वो वाला फेज जहां आपके ऊपर नॉट जस्ट एज अ प्लेयर यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, बट जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो उस टाइम पे वो चीजें मेंटेन करना, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू द पीपल हु वर अराउंड मी दैट टाइम, एंड स्टिल दोस पीपल आर अराउंड, आई मीन टिल द टाइम दे आर like my support system kind of। Right. तो मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं किसके साथ उठती हूँ, मेरी रूटीन क्या है, और मुझे मुझे कब किसको मना करना है, राइट? आई नीड दैट स्पेस, so that I can sit back and think about things, what is working for me, what is giving me that happiness or peace at the same time, I'm doing my routines। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने, आई मीन आई ऑल्सो गो थ्रू सम इंटरव्यूज अबाउट मेंटल हेल्थ और ये सारी चीजें, लोग बहुत डीपली बात करते हैं इस चीज पे, बट जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, देन आई स्टार्टेड वो एक्सेप्टेंस आती है आप में कि यस, ये चीज एग्जिस्ट करती है और ये कितने लेवल पे आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। वेरी डिफिकल्ट 3 months फॉर मी, और उस चीज से वापस आने के लिए I'm grateful that I had my own people around me। I think that's wonderful, ma'am. Like you said, whether it's on the field with your team or at home with your personal circle, the people you surround yourself with really make a difference Yes, in how you are. And they are going to tell you the honest feedback about yourself, whether you are good or bad. They are not going to make no buttering, no flattering, and they are not with you just because of your, I mean, your professional status, or that you are someone. They're just liking you because you are just another human to them। So that is more important, because वैसे ही जब आप अच्छा कर रहे होते हो, आप when you are gaining those heights, सब आपको अच्छा अच्छा कहेंगे, right? Nobody will notice your flaw, even not yourself, right? आप भी वो flaw को ignore कर देते हो, right? हो जाता है, that's how it is। तो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपके जो अपने लोग हैं, जिनका फीडबैक आपके लिए मैटर करता है, व्हाट इज दैट, आर दे गिविंग यू ऑनेस्ट फीडबैक? अगर हाँ, आप सही माइंडसेट पे हो, इफ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट दिस इज द फ्लॉ, दिस आई नीड टू करेक्ट, then I'm sure you are definitely on right path। That's a very interesting thing, ma'am. And I think Manpreet's question comes very similar to that line itself. So I'd like to just invite her to ask her question to you. Yes, please। So, firstly, I would like to say I feel privileged to get this opportunity to talk with you, ma'am. So, same here। as a student, yeah, please। so as a student, I always face this difficulty to manage my work life and my personal life. So, my question to you is, how do you balance your personal life and your commitment to cricket? What are some lesser known challenges of the cricketing world?
आपकी मुझे आवाज कट के आ रही है। अगर मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करूँ तो आपने यही पूछा है ना कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। सी आई डोंट हैव बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में बोलने के लिए, बिकॉज एट द एज ऑफ 17 आई लेफ्ट होम, आई लेफ्ट माई पेरेंट्स, दे लिव इन शिमला. So just because there is no academy, there is no setup for women, women cricket, so I had to leave that place. So if I talk about personal life, then it's just me. Okay, for me, I don't have to handle my parents, my friends, or my siblings. I just have to look after myself. So that way, I'm grateful that they have been always uh, behind me, backing me all the time. And I never felt that sort of pressure. Yes, they are very क्या कहते हैं उनको, उनको बहुत समझ है इस चीज़ की कि मेरे तक क्या चीज़ आनी चाहिए, वो मुझे क्या चीज़ बतानी है. इफ समथिंग इज हैपनिंग, घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे टाइम पे मुझे ना बताए कि वो मुझे इफेक्ट ना करे. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप सीरीज खेल के वापस आते हो, आप टूर्नामेंट खेल के खत्म हो जाता है, तब जाके आपको पता चलता है. तो आई टेल यू वन थिंग, 2019 में हम ऑस्ट्रेलिया में थे, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए मैचेस खेल रहे थे. मेरे पापा का कार एक्सीडेंट हुआ. सो मुझे 3 या 4 दिन बाद पता चला, जब वो मैचेस वाला फेज सारा खत्म हुआ. देन आई गॉट द पिक्चर्स, ग्रेटफुल टू गॉड. उनको तो कुछ बिल्कुल भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ. ही वॉज वेयरिंग सीट बेल्ट और पहाड़ों में ही वॉज सेफ. सो दैट वे उस टाइम पे अगर वो चीज मुझे पता चल जाए और वो आप डिस्टर्ब होते हो मेंटली, राइट. सो दैट वे दे आर ऑल्सो वेरी कैलकुलेटिव कि क्या चीजें क्या बतानी है क्या नहीं. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी रूटीन्स क्या है, हु इज देयर इन माई लाइफ, किसकी इंटरफेरेंस है किसकी नहीं, और किस हद तक वो इंटरफेरेंस होनी चाहिए, राइट. आई हैव टू डिसाइड माई थिंग्स फर्स्ट. आई हैव टू डिसाइड माई, I have to plan my whole day, right? So who am I'm going to meet, right, throughout day. So उसके साथ मेरा क्या relation है, right? And how much time I should give to this person, how much energy should I, मेरी यहाँ लगनी चाहिए, कैसे, वो सारी चीजें बहुत important होती है खुद को manage करना. I think that way I feel very blessed because I come from touch wood, I come from a very nice family background where we are very sorted education wise. So that sort of pressure was there on me also. I chose a very different field getting into cricket. So that way I was sorted. I got all the etiquettes from my family, that how to conduct myself. So that way I still मेरे को अभी तक कोई difficulty face नहीं हुई है ऐसा कि मुझे कभी stress लगा हो कि यार this is what is happening in my personal life, and that's why professional is also good. And अगर आपको मुझे कुछ बोलना है, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट इट्स गुड दैट स्पेशली आजकल की जनरेशन वेयर देयर इज we are too much into social media. We get every sort of information within a second and on internet, right? On every platform. So like if I talk about 10 years back, 90s kids, we used to get all the information when we turned 23, 24. Now same information kids are getting at the age of 12 or 13. So it's very important how you manage yourself, how आप टाइम को कैसे पूरा दिन का टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो, राइट. डिवाइडिंग कि यार मेरी एनर्जी यहाँ इतनी लगनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक यू आर ऑल द टाइम ऑन सोशल मीडिया. योर स्क्रीन टाइमिंग इज लाइक 2-3 hours you are totally on social media, and next 2-3 hours your mind is shut. That's how it is. The more you use it, and माइंड आपका थोड़े टाइम के लिए तो वॉश आउट रहता है. मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया तो मेरी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है. सो इट्स वेरी गुड टू रियलाइज ऑन टाइम कि मुझे क्या चीजों के लिए कितना टाइम देना है, किसमें मेरी एनर्जी लगनी चाहिए. Right, ma'am. I think what you said is very important. To regulate yourself, I think it's important for one to understand their own routines, their own people, and to make these decisions for themselves so that they are, they can face all their challenges properly and have a balance. Now, I'd just like to quickly invite Isha also. I think she has a question for you as well. Hello, friends. My question is, who has been your role model in cricket
and why? Sorry, can you please I come think again? she's asking you who your role model in cricket is, ma'am. Cricket mein who's your role model In and why? cricket, so when I started playing, I grew up watching Sachin Tendulkar sir and Adam Gilchrist. Those days, both were fantastic. अगर मैंने keeping choose करी है just because of Adam Gilchrist, then later on MS Dhoni. Now you see विराट कोहली. So role model आपके change होते रहते हैं आफ्टर कुछ टाइम के बाद. बट जब मैंने खेलना शुरू किया तो हमेशा सचिन तेंदुलकर को टीवी पे देखते हुए जिस तरीके से वो इनिंग्स अपनी खेलते थे, वो टाइम था जब वो अपने पीक पे थे. जिस तरीके से आज विराट कोहली, आज की जनरेशन के लिए विराट कोहली का जो इम्पैक्ट है वो हमारे लिए उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर. और मैंने एडम गिलक्रिस्ट को बहुत एडमायर किया है. Right, ma'am. डू यू I नो think हु they इज are role एडम models. गिलक्रिस्ट? डू यू नो? I'm a little familiar, ma'am. Not No, too no, much, not you. but a little. I'm asking. Sorry, I forgot her Isha? name. Isha. Yes. Isha. Do you know who Uh, is Adam Gilchrist? No. no, No. So go back and Google it. You'll get to know him. okay. Yeah. He's Australian wicketkeeper batter. Used to come and open. Right, ma'am. So, like you said, I think all of these people you named are role models, not only of their performance on the field, but even off the field. Yes, so How they are in. you are right. So सचिन क्यों, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन दिनों में सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था. जितना हमें कोई अगर महीने में एक आधा कोई इंटरव्यू आ गया किसी न्यूज चैनल पे या फिर किसी न्यूज़पेपर पे, क्योंकि न्यूज़पेपर उन दिनों में बहुत ध्यान से पढ़ा जाता था. अभी मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ ना, मैं अभी न्यूज़ देखती हूँ. मैं अपनी बात बता रही हूँ. उन दिनों में मैं ज्यादा इंटरव्यूज पढ़ने, तो प्लेयर्स का पता चलता था. सचिन तेंदुलकर की हाउ ही यूज टू स्ट्रेस ऑन दिस थिंग कि आपको नो मैटर आप कितने सक्सेसफुल क्रिकेटर बनो, बट बिफोर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल, टू बी ग्राउंडेड एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स. तो ये सारी चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करा है बियॉन्ड क्रिकेट भी. या And I think you also embody those values very much, ma'am. I think for a lot of people, all the 1,000+ people here, respect you because even you very seriously hone these values. But I'll just quickly move on to my next question, ma'am, because which is sports, getting into sports as a career is still something that's not very encouraged. Unless at a very young age somebody shows a lot of talent, um, people don't really encourage, parents or otherwise. And sometimes, even if they have exceptional talent, it is discouraged to get into the sports field. So, what would be your message to all the aspiring athletes who have to fight these battles to get to the sports field? And is this even more difficult for girls and like female players? What would be your message to them? yeah. Yes, it is difficult for women players, not just in cricket, but in general also in India. The culture is very different, right? So हम बात करते हैं कि women athletes, it's not वो इतना बड़ा जंप नहीं है कोई. Like बहुत ही अभी भी मैं रोज कुछ ना कुछ बहुत सारे प्लेयर्स मिलते हैं, एकेडमी में नए प्लेयर्स आते हैं. व्हेन आई टॉक टू देम आई फील वेरी बैड दैट दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स फर्स्ट, राइट? बिकॉज दे आर योर इमीडिएट फैमिली. एंड अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी और सपोर्ट करेगी, राइट? बिकॉज हर कोई हाईएस्ट लेवल पे नहीं खेलेगा एंड प्रेशर बहुत ज्यादा है, राइट? बीइंग एन एथलीट इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव. अगर वैसे ही आपका करियर स्पैन छोटा है, आप प्रॉबेबली 35-36 या एट द मैक्स 40 एज तक आप फाइट करोगे, राइट? उसके बाद बट मुझे लगता है कि स्टिल क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो, स्टिल वी आर फाइनेंशियली स्टेबल नाउ, थिंग्स आर गेटिंग चेंज दैट वे. बट मेरा मैसेज अगर है तो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए है कि अगर आपको राइट टाइम पे अपने बच्चों में वो कहते हैं ना कि होनहार वीरवान की होंठ चिखने पात, कि वो अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं कि दिस गर्ल हैज गॉट समथिंग स्पेशल, अलग सा स्पार्क है एंड शी हैज गॉट डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज और वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, जस्ट जाओ, उसकी हेल्प करो. फाइंड नाइस एकेडमीज, बेस्ट ऑफ बेस्ट, गेट
आई नो इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और सबके लिए अफोर्ड कर पाना भी आई थिंक पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जितना आप बेस्ट कर सकते हो, इंट्रोड्यूस हर टू बेस्ट एनवायरनमेंट, क्रिएट दैट एनवायरनमेंट अराउंड हर, और अगर आप उसको वो एनवायरनमेंट दोगे तो डेफिनेटली सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी। जब मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तीसरा इंसान आके बाहर से कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट्स हाउ इट इज फॉर एवरीवन। सो फर्स्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, then your immediate siblings, then your friends. They have to be welcoming about this thing, that you know कि ये एथलीट है, राइट, हमारी लड़की स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, ये करियर ऑप्शन है, यस डेफिनेटली है। नाउ यू सी सोशल मीडिया कितनी बड़ी चीज है, राइट, नॉट जस्ट फॉर elite athletes. You see there are lots of athletes, those who are still national or state खेल रहे हैं, but still they are getting perks of this hard work, और जो उनकी I mean जितनी dedication के साथ वो workout कर रहे हैं, and these things are same for everyone: hard work, dedication, disciplined life, you know. I think diet वाइट ये सारी चीजें बात की है when you come to that stage where you can afford this, that sort of lifestyle, but having disciplined life that you can afford any day, anytime. So just keep dreaming, you'll get it one day. Okay, so if you don't get that sort of environment, make sure that you start building that change from within, that you know आप वो culture लेके आ रहे हो जहाँ पे आपको वो माहौल नहीं मिला, but make sure that when you are in that position, build it. I think I took away two things from your answer, ma'am. The first thing is to dream big, and the second is to build the discipline to make that dream come true. Yes. Like you said, having dreams and discipline is something that does not cost anything, but it only requires hard work to make come true. But I think something that has been a revolution in India, like you were also talking about a little while ago, even at I.I.M.U.N conferences, जब हम high school के बच्चों के लिए कराते हैं, तो हम उनके लिए IPL auctions का committee रखते हैं, where high school students build their own Dream 11 team. They actually play the auction and they build their team. So in Wow. that, one of the new things that even we've been doing is the Women's IPL. So what do you Okay. think the role of the Women's IPL is currently? What is the future for women's sports in general with the Women's IPL in question? Of course, it's bright, right? Only upwards from here. There is no looking back. So now when we look at the men's team, वो सारा setup कहाँ से change हुआ है? जब IPL शुरू हुआ था, right? So now you see, I think 14-15 season हो चुके हैं. उसके बाद की result देखो आप, domestic players, the kind of confidence they are carrying, और जिस तरीके से compete कर रहे हैं, all international, overseas, जितने भी elite cricketers हैं, सबके साथ compete कर रहे हैं, they are doing pretty well. इस टाइम पे अगर आप देखो तो इंडिया की अगर मेन टीम बनानी, how difficult it is, right? So definitely domestic structure better होगा. Same effect WPL का, probably within 3 or 4 season वो चीजें देखने को मिलेगी, change, जिस तरीके से men's cricket में वो change आया है, right? This is very important कि just having that mindset where we are also competing with the overseas elite athletes, elite cricketers, और हम especially as a domestic cricketer, we are also having that mindset कि वो लोग क्या चीजें कर रहे हैं, and we are also not less than them. It's just a matter of those 3-4 years where हम उनसे better हो जाएंगे और उनको एक tough competition देंगे. So probably domestic players के लिए बहुत बड़ा boost है, और it's just upwards from here. That's wonderful to hear, ma'am. And like you said, I think it's just a matter of time when all playing fields have become level. And I think we can get one last question from the students. I'd just like to call on Isha again, if you can ask your question to ma'am. Yes, I have one more question. Like, how do you pick yourself up after a match that did not go your way? And how would you advise us young people to deal with the setbacks? I think, okay, I'll just try to let me know if the question is the same as what you're asking. I think her question is, how do you deal with setbacks? What would your advice be to all of us young students watching to deal with setbacks? Like, say, you would have had experience where matches did not go your way.
So when you've had that setback, how do you pick yourself back up and go for it again? If that's the question you're asking. Yeah. Yes, Yeah. so Yes. राइट क्वेश्चन यार. जब मैं शायद आपकी जगह पे थी at your age, I also had this question. I never got this answer. It's just by experience. I kept going. Okay, so being into team sport, lots of learning. अगर शायद मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट खेल रही होती तो शायद ये चीजें काउंटर कर पाना थोड़ा सा डिफरेंट रहता मेरे लिए. जो मैंने एक टीम स्पोर्ट को खेलते हुए चीजें फेस की है, सीखा है, उसमें सबसे पहले यही है कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, शायद ये स्पोर्ट्स पर्सन के पास ही ये प्रिविलेज है टू हैव दैट माइंडसेट even after losing also. We get up next day, we start preparing for another fight, another game, and we always look to win. So yes, जिस टाइम पे ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन रहता था और ये डाउट्स रहते थे कि हारेंगे तो क्या हो जाएगा मैच से पहले या फिर एग्जाम से पहले, जिस तरीके की वो नर्वसनेस रहती है. ये सबके साथ होता है एंड ये होना भी जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आप कभी भी फील नहीं होता है. दैट मीन्स यू आर नॉट इन द मोमेंट, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द इवेंट यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ, राइट? सो ऐसा फील होता है बहुत बार, अभी भी फील होता है कि अगर ये ऐसा हो गया तो क्या है. बट अगेन स्पोर्ट्स हैज टॉट, आई एम श्योर हर स्पोर्ट्स पर्सन को यही सिखाया है कि दूसरे दिन कैसे उठना है और कैसे फिर से मेहनत करनी है, राइट? विद सेम डिटर्मिनेशन, विद सेम सॉर्ट ऑफ वो माइंडसेट कि यार मुझे सिर्फ जीतना है, मुझे सिर्फ जीतना है, राइट? मुझे सिर्फ बेटर होना है यहाँ से. तो वो माइंडसेट, और शायद उससे पहले वो एक्सेप्टेंस लाना कि अगर आप हारे हो, राइट? सो सिट बैक, नोट डाउन द पॉइंट्स, कहाँ वो कमियां थी, एंड नेक्स्ट डे हैव दैट प्लान, sit with your coach or sit with your teachers maybe, right? So have that plan on the table कि मुझे ये चीजें कैसे मैं ये बॉक्सेस दोबारा टिक कर सकती हूँ और बेटर कर सकती हूँ. तो ये स्पोर्ट्स ने सिखाया. आई थिंक जब मैं स्पोर्ट्स से पहले की बात करूँ तो बीइंग इनटू स्कूल ये मुझे इतना सीखने को नहीं मिला, ठीक है, कि कम बैक कैसे करना है, क्योंकि ईयरली एग्जाम होंगे, आप यू आर हैविंग आराम से चिल्ड आउट लाइफ 7-8 महीने, देन सडनली रश करते हो पढ़ाई की ओर, ठीक है, फिर वो 2-3 महीने का प्रेशर है. बट क्रिकेट में you win every day, you lose every day, but next day we get up again, we have that solid mindset and determination again and that discipline. So I think ये sports person के पास एक extra advantage है being into sports. So for you especially, I have this advice: if you are not into any sport, go and start playing any sport. You'll I experience. do. Okay, gymming is also good. You're getting fit. Good. तो उससे भी आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस करते होंगे अपने आसपास की लोग कितना वेट उठा रहे हैं, कितनी सही फॉर्म में ये एक्सरसाइज कर रहा है, मुझे भी इसके जैसे बनना है, राइट? तो यू कीप इम्प्रूविंग एवरी डे. तो वही है कि आप जैसे ही आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हो, वो खुद से ही वो आ जाता है यार अपने अंदर कि मेरे में वो जील आ जाती है कि यार मुझे फाइट करना है, मुझे बेटर होना है, नो मैटर क्या होता है मेरी लाइफ में, है ना? वेल डन, So कीप true, ma'am. गोइंग. I think I think the whole idea that you said, that you need to reflect and you need to calculate, you need to plan your own improvement, and nobody else will come and do it for you. And then to of course Yes. seek your mentors and learn from them also. And just before we wrap up, ma'am, I had one last question for you. If there are 3 things that every aspiring athlete should start practicing in their life, what are those 3 things you would recommend to become successful? यार इसकी कोई आई डोंट थिंक सो, ऐसा कोई मतलब मैं इट्स जस्ट अ वेरी पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहूँगी. मेरे लिए सब लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क डेफिनेटली आपके स्टार्स, राइट, ये सारी चीजें हैं, बट उससे पहले फॉर मी डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट. हैविंग दैट डिसिप्लिन नॉट जस्ट प्रोफेशन वाइज, but even that practice has to be beyond your profession. It starts from your when you get up, what is your routine, how you have planned your day. This I have talked before also, right? So for me discipline is more important, and hard work, those sacrifices, these things are also equally, ये भी साथ चलती है.
बट ऐसा मेरे मेरे केस में आई ऑलवेज रेट हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन ऑन टॉप एंड लेटर व्हेन यू कैन अफोर्ड बहुत सारी चीजें अफोर्ड व्हेन आई से अफोर्ड दैट मींस later when you start earning professionally, right, you can afford good lifestyle, you can afford good food habits. So that is not I mean not everybody can do that, right? So I think discipline और hard work एक ऐसी चीज है जो हर कोई afford कर सकता है. इसके लिए आपके पास you don't need any sort of bank balance, you don't need any sort of increments और कोई कोई आपको financial help नहीं चाहिए इसके लिए. You just keep going, have that faith or belief in you that one day you are going to get it, no matter what. And I believe in this that doesn't matter आप कहाँ हो, किस लेवल पे हो, कहाँ compete कर रहे हो, highest lowest कहीं पे भी हो, whether you are आप कमबैक की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अभी जस्ट आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, बट अगर आपने हार्ड वर्क किया है, आपने एक डिसिप्लिन लाइफ एक्सपीरियंस की है, आपकी वो रूटीन सही है, आप डिटर्मिनेड थे थ्रू आउट, तो आपको चीजें मिलेंगी. एंड मैंने खुद के साथ ही एक्सपेरिमेंट्स किए, सो आई ऑलवेज बिलीव इन दिस. Very true, ma'am. Thank you so much for that answer. I think it takes us back. Discipline and hard work are the sure Yes. shots to success. Like you said, until you can afford it, you do the two things that you can do every day, Yes, yes. and then you keep building it until you get there. So, ma'am, just to end on a light note and to have a little fun, we play a small rapid fire with all of our guests. Of course, there's no hamper, but I'll just read out a bunch of words. और आपके दिमाग में जो भी first thing it comes, you can just share with us. Okay? Okay. So we'll start off with, I think, the most important thing in your life also, cricket, Batting. batting. The Women's IPL, Mm, bright. Upwards. Yes. wonderful. And Your one more thing. So Yes. women, when you talk about WPL, for me the scariest thing is if we look at the other side, it's auction time. So yes, I can say just cut those answers. Auction time. Done, I think. Your favorite place that you've ever visited? Although मैं पहाड़ों में पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, मुझे पहाड़ी अच्छे लगते हैं, बट बाली. Wonderful. Your favorite stadium? धर्मशाला. Wonderful. Your comfort food, the one dish that will always make you happy. Momos. I think all of us can agree on that answer. और I वो भी can see in the कहीं chat इधर उधर नहीं खाने का, एक ही जगह है, वहां जाके खाओ, धर्मशाला, एंड यू गेट बेस्ट मोमोज. इधर उधर ट्राई नहीं करने का, जब जंक खाने का तो बेस्ट जगह से खाने का. Done. I think a lot of people in the chat are also agreeing with you that momos are the best. The next word is India. I thought I noticed the flag behind you from that Salute. end. And you are one of the biggest prides of India also, ma'am. And the last thing, our organization, which is I.I.M.U.N. I think creating leaders, Thank you so much. building nation. And thank you so much, ma'am. And with that, with a very heavy heart, we must call the curtains on this session. I think this has been one of the most inspiring, time I've spent talking to somebody. A lot of people have taught us that interacting with one legend is equal to reading 1,000 books. And I think this session has been worth 10,000 books. So thank you so much for spending your evening with us, ma'am. It has been very inspiring to all of us, the students present, and everybody else who's going to watch this live now and afterwards also. So thank you so much for what you do. You're an inspiration to a lot of people. And thank you so much for joining us today. It's been an absolute pleasure. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you.